Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So in today's class, बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप स्ट्रेट टू द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया. सो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ 1800s. ठीक है, कौन सी सेंचुरी? 19th सेंचुरी. सो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी we have seen the establishment of three banks. कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी उस टाइम जो एकदम टॉप स्टार वाली प्रेसिडेंसी थी? ऑफकोर्सली बेंगोल, देन मैड्रास एंड बॉम्बे. So three banks in these three presidencies have been established in the first half of 1800s. Now in 1921, these three banks, इनको क्या किया? They have been merged because at that period of time we don't have RBI, Reserve Bank of India. So bank has been created by merging these three presidencies bank and given it name and for some time this Imperial Bank of India has designated the role of Central Bank of India. Understood? Now in 1955 आज़ाद हो चुका है देश. In 1955 at the time of independence the banking sector of India was moderately developed. Okay, जितनी हमारे इकोनॉमी की इतनी खस्ती हालत थी, जितने हमारे इंपोर्ट्स गिर चुके थे, एक्सपोर्ट्स गिर चुके थे, उतनी गंदी हालत हमारे बैंकिंग सिस्टम की नहीं थी. ठीक है, बट ऐसा भी नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ठीक ठाक थी. सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आवर बैंकिंग सिस्टम हैज़ बीन मॉडरेटली डेवलप्ड, बट वी हैव टू इंक्लूड एज आवर नेशन हैज़ टू बी डेवलप्ड वेरी फास्ट. ठीक है, एंड वी हैव सीन दैट वी हैव अंडरटेकन द रोड ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न. कैसे डेवलप करेंगे? अंडर द सोशलिस्टिक पैटर्न. ठीक है, कैसा सोशलिज्म? पॉलिटिकल सवाल है. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. इट मीन्स वी विल नॉट नेशनलाइज ऑल द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बट वी विल नेशनलाइज एज पर आवर नीड्स. सो वी आर काइंड ऑफ फॉलोइंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक कंसेप्ट. अंडरस्टूड? तो ये थोड़ा पॉलिटिकल पार्ट था. So in 1955, as we want to increase the trust of Indian public in the banking system, as well as we have to generate more bank branches, we have to expand more bank branches in India. So in 1955, this Imperial Bank of India is nationalized and name changed to the famous State Bank of India. Understood? Now in 1969 क्या हुआ था फेमस बैंकिंग सिस्टम में? 14 बैंक्स, आई थिंक 14 ही थे, देख लेना, हैज़ बीन नेशनलाइज्ड. Why? Because this banking sector legacy has been given to us by the Britishers. So for the development in their own minds, Britishers' mind, the development of nation can be done when the funds are available with capitalist, industrialist and businessmen. So with this kind of mentality, all the remaining sectors of economy are underdeveloped. Why? Because there is lack of funds. So now 1955 SBI has been nationalized, previous name Imperial Bank of India, but now we are still having this kind of problem. So in 1969, to solve this problem, we have nationalized 14 banks. Understood? And the objective now given to these nationalized bank is of two kind. So first is we have to
expand the bank branches in the underdeveloped sector. And second of all, we have to provide credit to this underdeveloped sector, as this is the basic mindset of the Britishers, that we have to make sure that funds should be available for these kind of people. But on the other hand, agriculture, medium scale and small enterprises, these are having the scarcity of funds. So half of our economic sector has been underdeveloped, and the remaining 1%, 5% is developing at its own pace. So this kind of problem have been solved. पूरी तो सॉल्व नहीं हुई थी, बट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व बाय नेशनलाइजिंग दीज पर्टिकुलर बैंक्स इन 1969. नाउ नेक्स्ट वेव ऑफ नेशनलाइजेशन कब हुई थी? 1980. आपको सब याद होना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस कब नेशनलाइज हुआ था, जनरल इंश्योरेंस कब नेशनलाइज हुआ था, कोल नेशनलाइजेशन ईयर. ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए. In 1980, again I think 5 to 6 number of banks have been nationalized. And the objectives are the same कि भाई आप credit provide करो to the underdeveloped sector, and there should be maximum expansion of bank branches. So by having all these kind of solutions to our problems, yes, we have seen a tremendous amount of increase in the saving rate of economy. Then huge branch expansion we have seen. So we have taken our two problems. The third thing is the credit to the प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. ठीक है, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. यस, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का भी कंसेप्ट उसी टाइम आ गया था. अंडरस्टूड? नॉट टिल द टाइम दिस स्टोरी इज हैपनिंग टिल 1991. सो यू नो एट द टाइम ऑफ 1991, आपको पता ही होगा ईयर, अगर आपने कहीं से पढ़ा हुआ है कि एलपीजी रिफॉर्म्स वी हैव टू इंस्टिल इन आवर इकोनॉमी. सो दिस इज हैपनिंग till 1991. So क्या क्या हो रहा था? Yes, there is enormous expansion of branches. Yes, there is increase in saving rate. Yes, we are providing the credit to the priority sector lending. But you know, after these nationalization, RBI has also increased the CRR as well as SLR ratios. The priority sector lending is designated at 40% of the total loans. And this CRR and SLR, I think it is around SLR is around 38.5% till 1991, and CRR is about I think 25% something. So you know, a huge amount of money has been stacked in banks or in RBI chambers. So you know, more than 50% of money has to be kept in bank chambers. So it is the unused money, and the rest 40%, 50% और बची, and the rest 40% has to be given to priority sectors lending. So banks के पास अपना क्या बचा? It means the banks only have the discretion of only 10% of their funds to lend on their own discretion. ठीक है? So इतना सब banking को जो हो रहा था, अंदर ही अंदर चीज़ें चल रही थी. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस? सॉरी, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस? सो रिजल्ट इज देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ inefficiency in the administration of bank. The banks are on the path of unsound administration. ठीक है? Moreover, the administration of bank, you know, the banks have been regulated by the Ministry of Finance and RBI both. ठीक है, तो दोनों रेगुलेट करते थे बैंक्स को. सो क्या होता था? देयर इज नो प्रोफेशनलिज्म इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स. अंडरस्टूड? गवर्नमेंट अपना ही कोई चुनिंदा बंदा वहाँ रख देती थी, हु डजंट हैव एनी नॉलेज और क्वालिफिकेशन टू बी अ
डायरेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये चीज़ भी वहाँ थी। देन इतना CRR और SLR था कि यूज़ ही नहीं कर पा रही थी इतनी सारी मनी। तो अंडरस्टूड। सो दीज ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर क्रीपिंग इनसाइड द इंडियन इकोनॉमी। फिर हमने देखा 1991 में जैसे कि फिस्कल डेफिसिट इतना ज़्यादा हो गया था, हमारा जो इम्पोर्ट था वो शायद से 2 या 3 मंथ के ही हो गया था। फिर हमको IMF के पास जाना पड़ा। देन वी हैव टू टेक लोन फ्रॉम IMF। देन IMF हैज़ गिवन अस अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अ लिस्ट ऑफ थिंग्स डेट वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन आवर इंडियन इकोनॉमी। भाई अपना CRR कम कर दो, अपने कस्टम ड्यूटीज़ को थोड़ा एनहांस कर दो, अपना टैरिफ को जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके टैरिफ को कम कर दो। ठीक है, तो ये सब हमको IMF की बातें माननी पड़ी। सो उसके बाद IMF ने हमें लोन दिया। देन वी हैव अप्लाइड द LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी। So you know, when all of these things happening till 1991, so one committee has been appointed, the famous committee M. Narasimhan. Around 1990, this particular committee has been appointed to give suggestions on the banking sector reforms. देन नरसिम्हन वर्मन जी ने थोड़ी कुछ recommendations दी. Actually what is happening in our Indian economy, in the banking system, the lending rates and the cost of deposit is also been regulated by government of India. जो हमने lending rates पढ़े ना, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तो करेगी, और जो 10% पढ़े उसमें भी लैंडिंग रेट कौन डिसाइड कर रही थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड? कितने फंड्स देने, किसको देने, एवरीथिंग हैज़ बिन रेगुलेटेड। सो नरसिम्हन वर्मन कमेटी ने ये बोला, फर्स्टली वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस इनएफिशिएंसीज। अंडरस्टूड? देन CRR and SLR should be reduced so that banks have enough fund to generate their own profit by lending to someone. Then these regulation on the lending as well as deposit rate has to be deregulated. Then we have to instill some competition in our Indian economy. It means nationalization, the nationalization you have done, these banks should be gradually denationalized. Then we have some competition in our economy, and wherever there is competition, these inefficiencies, this unsoundness will be reduced. Understood? So CRR कम करो, SLR कम करो. Then we have to have some banks of international kind, 2 to 3 banks of international kinds. Then below that we have to have banks which are of national kind. So we have to have 8 to 10 banks of the national kind. तो ऐसी चीज़ें नरसिम्हन कमेटी ने दी. अंडरस्टूड? तो उसके बाद थोड़ी सी अप्लाई हुई, थोड़ी सी नहीं हुई. देन अगेन इन 1997, आई थिंक यही था ईयर, नरसिम्हन वर्मन कमेटी 2 हैज़ बीन अपॉइंटेड अगेन. इनको फिर से बोला, सर आप हमें बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स की कुछ गाइडलाइंस दीजिए. तब इसमें नरसिम्हन वर्मन कमेटी ने वापस से 3-4 एक्स्ट्रा दे दी. एक्चुअली मैं सारी नहीं बता रहा, सारी तो पढ़नी पड़ेगी, बट ये कुछ ना कुछ थी जितनी मैंने बताई. देन नरसिम्हन वर्मन कमेटी 2 ने बोला कि एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाओ. इसमें क्या होगा? द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज काइंड ऑफ अ बैड बैंक. नाउ व्हाट इज अ बैड बैंक? So this bad bank is not a backbencher, but क्या ये all the bad loans which have been aggregated by the public sector banks, all the NPAs, non-performing assets, all the losses which have been incurred in the public sector banks, those losses, those NPAs will be transferred to the accounts of this bad bank. और ये बैड बैंक बनाएगा कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इस पे फंड्स कौन एलोकेट करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड दिस बैड बैंक, क्या बोला मैंने? दिस असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ टू बी गिवन सम यूनिक पावर्स सो दैट ही हैज़ एक्सपर्टीज टू रिकवर सम अमाउंट ऑफ लोन, दिस NPAs, फ्रॉम द
जो भी हमारे पोटेंशियल जिनसे भी हमने लिया है उनसे, ठीक है। क्योंकि सारी तो आप अगर जैसे मतलब 100 करोड़ रुपए बैंक्स ने पीएसबी ने दिए एक इन्वेस्टर, नॉट इन्वेस्टर, एक बिजनेसमैन को, नाउ दैट बिजनेस हैज़ बीन फेल्ड, बैंकरप्ट हो गया, तो 100 तो नहीं आ पाएंगे 100 करोड़, बट क्या पता 50 करोड़ हो जाए, 60 करोड़ आ जाए। PSBs आर नॉट इन अ पोजिशन टू टेक बैक 10 करोड़ 20 करोड़। क्यों? बिकॉज इतने बड़े PSB है, इतना सब उनको चीज़ें संभालनी है, तो उस पर इतना ध्यान नहीं जाता है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि इसके पास एक्सपर्टीज भी नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास। Now these professionals in this asset reconstruction company, these professionals have expertise as well as their sole agenda is to recover the amount of NPA. Understood? So नरसिम्हन वर्मन कमेटी ने बोला कि ऐसे कुछ आप बैड बैंक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। इसके बाद एक या दो कमेटी और है, पीजे नायक कमेटी है एंड नचिकेत मोर कमेटी है, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और वहीं क्लास हम एंड कर देंगे। एब्जॉर्ब दिस। एक दो और देख लेते हैं रिकमेंडेशन नरसिम्हन कमेटी की। अच्छा, आई हैव टोल्ड यू दैट these PSBs are under dual regulation of RBI as well as Finance Ministry. So one of the suggestions, one of the recommendation of Narasimham Committee 1 is you have to end this dual regulation. Please take out the Finance Ministry from this equation and give the sole responsibility, sole authority to RBI to regulate these banks. तो ये one of the थी। Then Narasimham Committee 2 में एक और थी कि बैंक should follow capital adequacy norms. What is capital adequacy norms? I have told you in the previous classes the same capital adequacy ratio या capital to risk weighted asset ratio, CRAR और CAR एक ही चीज़ है वो। So this was one of the other suggestion by Narasimham Committee 2। देखिए ये जो बैंक्स थे ना 1991 से पहले, these used to organize लोन मेलास कि भाई आओ और लोन ले जाओ जल्दी से, ठीक है। उनको बस अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कैसे न कैसे देनी थी, उनको किसी तरह से क्रेडिट अपना डिस्पर्स करना था, ठीक है। सो दे लैक द व्हाट आई शुड से क्वालिटी ऑफ असेसिंग द रिस्क वर्दीनेस ऑफ द पर्टिकुलर इन्वेस्टर। वो बिना कोई रिस्क असेसमेंट किए, रिस्क वर्दीनेस देखे हुए सामने वाले को लोन दे देते इन दिस लोन मेलास, ठीक है। सो यही सारी एफिशिएंसीज दूर करने के लिए दीज टू कमिटीज हैव बीन फॉर्म। नाउ वन मोर कमिटी इन 2030 हैज़ बीन फॉर्म, नचिकेत मोर कमिटी। आपको बस नाम याद होने चाहिए, रिकमेंडेशन तो बाद में मेंस में आप पढ़ ही लोगे। देन पीजे नायक कमिटी हैज़ बीन फॉर्म्ड। नाउ दिस पीजे नायक कमिटी टोल्ड द गवर्नमेंट दैट प्लीज फॉर्म अ बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्या करें भाई बना के? पीजे नायक जी बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, ये जो बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी आप बना रहे हो, ट्रांसफर GOI, RBI is wholly owned subsidiary of GOI and RBI is the owner of these PSBs. पीजे नायक जी बोलते हैं, नाउ डू द वन थिंग, प्लीज ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ PSBs टू दिस बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। तो अगर ये बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी के को शेयर्स मिल गए सारे PSBs के, तो क्या हो जाएगा? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल
प्लीज गिव, ये पीजे नायक जी बोल रहे हैं, प्लीज गिव दिस बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी BIC द अथॉरिटी टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स of these PSBs. So PJ Nayak committee is trying to infuse some professionalism and avoid some bureaucratization of these PSBs. So now on, these PSBs will remain profitable and also their NPAs will be managed properly. After that, when you transfer the shares of these PSBs to this bank investment company, so ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं SBI एंड ये सब, इन सबको लिमिटेड बना दो. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लिमिटेड? whenever you see a company name with a limited word, it means now it is not the authority of either government of India or RBI to save this company when it is going to be bankrupt. Understood? अगर आपके कंपनी के सामने लिमिटेड नहीं लिखा है, सपोज आपने कंपनी खोल दी आई हैव अकेडमी, नाउ देर इज नो वर्ड लिमिटेड, सफिक्स लिमिटेड रिटर्न, सो whenever this I have company will go bankrupt in the near future, so it is my obligation to return the funds, the money of the investors in this I have academy. Understood? बट अगर यहाँ लिमिटेड लिखा होगा, सो इसका मतलब जो भी इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया है, कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई, प्रॉफिट तो कमा नहीं रही, सो द असेट्स ऑफ दिस कंपनी विल बी यूज्ड टू पे बैक द मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स. नाउ आई एम आउट ऑफ इक्वेशन इफ देर इज लिमिटेड इन दिस कंपनी. It means my assets, my property will not get sold by these investors. तो कोर्ट में भी जा नहीं सकते हैं. अंडरस्टूड? सो दूसरा काम आप ये करो, पीजे नायक कमेटी बोलती है. अब पीजे नायक कमेटी क्या बोल रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इफ यू आर डूइंग दीज थिंग्स, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो till the time you are contemplating or discussing rules about these, please make an ad hoc body, bank board bureau. Understood? Now please give all the functions of BIC that I have quoted to this bank board of bureau. It means the directors of the PSBs will be chosen by this. The directors of other financial institutions like NABARD, National Bank of Rural Development, SEDB, Small Industries Development Bank of India, Export Import Bank. Then okay, these things, financial institutions. So bank board of bureau has a responsibility to nominate, elect the directors of these financial institutions also. Understood? सो यहाँ आ गया था प्री का क्वेश्चन, आई थिंक 2017-18 जब भी आया हो, तो यहाँ आ गया था हु अपॉइंट्स द डायरेक्टर्स इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एंड वन ऑफ द ऑप्शन वाज बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, एंड दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन. वो यहाँ से आया था. अंडरस्टूड? तो अभी की क्लास को इतना ही रखते हैं, आज थोड़ा कुछ काम है तो लेट हो जाऊँगा मैं. सो अगर आपको अच्छा लग रहा है लेक्चर, इफ़ योर कंसेप्ट्स आर गेटिंग क्लियर, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद.